So Gudari, you can see here, right? I have last time explained some factors to you. Okay, so this PPT will be given to you once I'll finish. अभी ये PPT upload नहीं हुई होगी. Please switch on your camera. You must have not got this PPT, right? Yes, ma'am. Just a moment. Okay, so now I'm going to revise some more points on this, okay, so that you will can understand it more better. The same point. We are discussing the chapter 1, okay, so the meaning, okay. So please write down here. You can say that anthropology is the holistic study of human beings. So this is the first definition which you will learn, that anthropology is a holistic study of human beings. Okay, this is the fundamental definition, that anthropology is a holistic study of human beings. This is what you have learned. Now we will make some more important points in it. Okay, so पहला जो important point है across time. This is all there in your chapter. I am making the point which you should remember. Okay, so after reading a book, after giving you the whole content, I am now giving you pointers which you have to remember. So across time means past, present, future. Okay, this is across time. Now if I'll talk about across space, across space means that all societies, cultures and regions. And regions, okay? So across time, across space, then across dimensions.
What is across dimensions? Biological, social, cultural. Okay, so this is 3 points which you have to understand. Now, key idea. What can be the key idea here? What can be the key idea here? Anthropology studies men in totality. So, anthropology studies men in totality. तो ये जो एक कॉमन डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, जब भी एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करते हैं, हम कहते हैं ये यूनिक डिसिप्लिन है, इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन अप्रोच, हम इसमें सारी चीजें ऐड करते हैं. तो एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है मैन इन टोटालिटी. तो मैन इन टोटालिटी का मतलब ये वाला पॉइंट है, ठीक है. So across time, across space, across dimensions. Now, when you people are like, writing your notes, making your notes, there has to be some important pointers on which you people are going to frame your answer. Now, what can be the core definition? See, in the previous classes, I have already based the, descriptive explanation of this idea. What I am doing, अभी जितना आपने पढ़ा है, उसको मैं और summarize कर रही हूँ, so that आपका revision चलता रहे. अब यहाँ पे अगर मैं core definition की बात करूँ, ठीक है? So if I'll talk about core definition, so now what will be the core definition for anthropology? Study of human evolution. इसलिए हमारे को सब कुछ जानना है, ओरिजिन, ठीक है, कल्चर कैसे आया, सोसाइटी प्लस बिहेवियर. We are reading everything. So this is the core definition of anthropology. Now, let's see about key features. अगर हम फीचर्स की बात करें इसके, तो एंथ्रोपोलॉजी डज नॉट स्टडी ह्यूमन इन पार्ट्स, इट कनेक्ट्स एवरीथिंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको लिखवा सकती हूँ. इट इज नॉट देयर इन योर बुक, दिस इज माय एक्सप्लेनेशन. एंथ्रोपोलॉजी डज नॉट स्टडी ह्यूमन इन पार्ट्स. ओके, इट कनेक्ट्स एवरीथिंग. हाँ, पानी लियो. इट कनेक्ट्स एवरीथिंग. So you need to understand what is connecting. Biology plus culture, language, society, everything. We are connecting everything, okay? So in this manner, what are we having? Integrated understanding. ओके, तो हमारे को एक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंथ्रोपोलॉजी से. ओके, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी ऐसा नहीं करता है कि बायो को अलग कर रहा है, ओके, सोशो को अलग कर रहा है, कल्चर को अलग कर रहा है.
और इसमें एक और बहुत आपको इस चैप्टर में एम्फसाइज मिलेगा कंपैरेटिव मेथड को, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट्स कंपैरेटिव मेथड। ओके, कंपैरेटिव मेथड क्या हो गया? स्टडीज डिफरेंट सोसाइटीज। Studies different societies, find similarities and differences. ओके, ये सारे नोट्स आप लोग प्लीज बनाते हुए चलिए, बिकॉज जब आप लोग नोट बनाओगे तभी आप लोगों को और बेटर क्लैरिटी होगी इसमें। तो आप इसमें क्या करोगे? आप इसको कह सकते हो कि ये हमको क्या करने में मदद करती है? हेल्प आइडेंटिफाई यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ ह्यूमैनिटी। जिसको आप कल्चर यूनिवर्सल, पैरेलल साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उसके थ्रू आपकी यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ ह्यूमैनिटी बढ़ती है, ठीक है। अब ये जो डिसिप्लिन है, यू हैव टू सी इट इज फील्ड वर्क। तो एक पूरा पॉइंट आपका कहीं ना कहीं आपके चैप्टर जब आप पढ़ोगे, इट इज ऑन फील्ड वर्क। इट इज फील्ड वर्क बेस्ड डिसिप्लिन, ठीक है। दिस इज व्हाट मेक्स एंथ्रोपोलॉजी पावरफुल। बिकॉज ऑफ इट्स फील्ड वर्क, ओके। अब यहाँ पे आप क्या करते हो? क्या मेथड यूज होता है आपका? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हो आप, ओके, विथ पार्टिसिपेशन। ये लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये आपका पार्टिसिपेशन होता है लिविंग विद कम्युनिटीज। और ये इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, ये लिखेंगे
ये सारे नोट्स बनाते हुए चलिए। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव रखेंगे इसको, स्टडीज ह्यूमन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्कोप जो है एंथ्रोपोलॉजी का, दैट इज रियली वेरी वास्ट, ओके, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। So you will see that the scope of anthropology is vast. Okay? Why it is vast? Because see, it is divided into 4 major branches. Bio, socio-cultural, archaeological, linguistic. Okay? The scope definitely is vast. Is this clear? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Now you will see if I talk about individually of all these branches, ठीक है? तो अगर मैं फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करती हूँ, लेट्स से कि मैं बायो की बात करती हूँ या फिर फिजिकल की बात करती हूँ, यहाँ पे मैं क्या पढ़ रही होंगी? आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडिंग ह्यूमन एवोल्यूशन, okay, then I would be studying genetics, then variations among humans, okay. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कहीं ना कहीं we do have study of fossils, DNA, etc. Okay, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताया. Okay, so you are seeing, you can see that integrated manner में, holistic manner में we are trying to understand each and everything. अब कल्चरल सी, इसमें कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में अगर आप बात करें तो हम यहाँ पे बिलीफ, कस्टम्स, ट्रेडिशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं, ठीक है. तो जैसे ये फिजिकल है, यहीं पे अगर मैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करूं, ओके, सो इन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी व्हाट आर वी स्टडिंग? इन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वी आर स्टडिंग बिलीफ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस. ओके, बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये सब हम पढ़ रहे हैं. So what are we studying here? How people live and think. Okay, how people live and think. This is what we are reading. I hope you are making your notes along with me, all of you.
Yes, ma'am. क्योंकि ऑलरेडी क्लास में हमने पहले वाली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू summarize it, okay, before starting something new. Now you can see here we can discuss about social anthropology. What are we discussing in social anthropology? Social relationships and social institutions. Okay, so basically here reflection is on structure of society. Then you have archaeological anthropology. Now, in archaeological anthropology, study of past human life. Study of past human life through material remains. Tools, poetries, that's what we study here. Okay? तो हम पास्ट में समझते हैं कि कैसे लोग रहते थे, किस टाइप के थे. तो ये इट इज ऑल पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी. तो अब इसका इंसाइट क्या है? व्हाट डू यू थिंक? ये इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस ब्रांचेस, आप इसको कह सकते हो. ये जो ब्रांचेस है ना, यही डिफाइन कर रहा है एंथ्रोपोलॉजी का डेफिनेशन बेसिकली. These branches show that anthropology covers past, present, biological, cultural dimension together. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. सो these branches show that these branches show that anthropology covers past, present, biological, cultural dimensions together. ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Now this is something I want you to understand in a precise manner. Okay, you can revise these notes right now. Just revise it because in today's class I will make you write answers. तो आज की क्लास में, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है, 2.5 आवर्स की क्लास है. आंसर राइटिंग इज माय फोर्टे. तो आंसर राइटिंग हम शुरुआत से करेंगे. 15 मिनट आपको मिलेगा इन दी एंड. आप आंसर लिखोगे. 15 to 20 मिनट्स आई विल गिव. 10 मिनट्स माय फीडबैक. ओके, देन एंड देयर. तो उस 10 आई विल जस्ट टेल यू कि आंसर को किस तरीके से लिखना है, क्योंकि जितना आप रोज प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको रिजल्ट आएगा. ओके, सो आई वांट यू टू रिवाइज इट.
Have you read these points? Yes, ma'am. Okay, now we'll do one exercise. Do an exercise by using these bullet points. Write a paragraph of 250 words. Okay, so see, answer writing कोई मैजिक नहीं है कि वो कोर्स खत्म होते ही आ जाएगा. आंसर राइटिंग का फोकस बच्चों को कराने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैं बेसिक क्लासेस कराती हूँ. बच्चे क्या करते हैं, वो जाएंगे कोर्स में, बच्चों को बोल दिया जाएगा कि एडवांस आपको बेसिक्स भी कराया जाएगा, तो क्लास 11 क्लास 12 पढ़ाया जाएगा. किस वे में पढ़ाया जाता है वो इम्पोर्टेंट है. आप देखोगे कि मैं मई 15 में जाके आपका सिलेबस स्टार्ट करूंगी, तब तक मैं आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग करूंगी दैट यू विल सी कि आंसर राइटिंग इट इज एन आर्ट. आपको खुद से समझ में आएगा, आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझोगे. सिर्फ पढ़ाना ही मेरा काम नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको पढ़ा दिया अभी और आप यू विल डू इट. नो, फॉर एग्जाम्पल लास्ट 2 क्लासेस जो भी हमारी पिछले वीक थी, मैंने आपको एक्सप्लेन करा एंथ्रोपोलॉजी, देन आई टोल्ड यू कि आपको थोड़ा थोड़ा रीड करना है. आप रिवाइज भी करोगे क्लास फॉर्मेट में, तो जब आप बार बार मल्टीपल सेम पॉइंट्स को पढ़ोगे अपने इस बेसिक्स क्लासेस में, मेंटरिंग क्लासेस में, यू विल रियलाइज कि अच्छा अब आपको सब्जेक्ट की पूरी समझ में आ गई है. फिर उसके बाद जो एडवांस लेवल के ट्रिक्स है, जो स्ट्रैटेजी है, वो तो आपको यू विल गेट दैट. बट हाउ यू नीड टू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट ओके दीज पॉइंट्स यू हैव लर्न. वी हैड मेड लॉट ऑफ डिस्कशंस आल्सो, almost 5 hours discussion, 4 hour discussion we have already got in anthropology last week. Now I have made you write all the points which is there in your chapter 1, meaning, scope and development of anthropology. Now I want you to do an exercise. Okay, I call this exercise as brainy exercise. Okay, I want you to write para 1, 2 or 3. Try to finish in 4 paragraphs. Okay, and the points which I have already given to you. Okay, this exercise should not take more than 10 minutes. Then I will show you that what basically happens with aspirants while they write answers. They are not able to write in a coherent manner. मतलब coherent होता है ना story. एक था राजा, एक थी रानी, राजा रानी रहते थे, उनके 2 बच्चे थे प्यारे प्यारे. वो बच्चे को एक दिन रावण ले गया, स्टोरी, फिर रावण को मारा. हम कहानी बनाते हैं तो हमारे दिमाग में उसको वो ना याद रहता है. अब जब आप एंथ्रोपोलॉजी को सिर्फ एकेडमिकली सोचोगे, भाई दिस इज अ कंपटीशन, ये एक टफ कंपटीशन है, सिविल सर्विसेज का कंपटीशन है. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ना है. ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. और आई डेफिनेटली सजेस्ट के ये बच्चे की खुद की मेहनत होती है. अब बच्चा डिसाइड कर सकता है कि डेफिनेटली उसको टीचर्स ने कितनी मेहनत कराई है. राइट, अगर आपको लगेगा कि यस हाँ उमा मैम से पढ़ने के बाद क्लैरिटी आई, अंडरस्टैंडिंग आया, समझ में आया, मेंटरिंग किया, उन्होंने हमेशा एक राइट गाइडेंस दी है, सो दैट इज एन अचीवमेंट फॉर मी. वेदर यू विल टेल माय नेम और नॉट, उससे मुझे और स्टूडेंट्स मिले ना मिले, ये मेरा पॉइंट नहीं है. आई एम अ नोबल, आई हैव चूजन दिस नोबल प्रोफेशन नॉट टू ओनली अर्न मनी. ठीक है, आपका ब्रेड एंड बटर का सर्वाइवल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन माय सोल गेट हैप्पी ओनली once I see the acknowledgement. वो है रिजल्ट, वो है रिवॉर्ड, जो कोई कोचिंग नहीं दे सकता मुझे, कोई नहीं दे सकता मुझे. राइट, तो अब आपको ये समझना होगा कि क्या कोई टीचर या कोई कोचिंग आपको वो क्लैरिटी दे सकती है. वो तभी आएगा ना. यू टोल्ड मी अबाउट मेंटरिंग, आई टोल्ड यू भाई अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डोंट गो फॉर इट. ओके, ये तो अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही करना है. आई एम देयर विद यू. ये 4-5 महीने की, 6 महीने की, 5 मंथ्स की जो हमारी जर्नी रहेगी, उसी को आप अच्छे से समझो गोडारी, यू विल बी एबल टू मेक इट. ओके, नाउ द प्रॉब्लम वुड बी इन एंथ्रोपोलॉजी फॉर यू दैट व्हाटएवर पॉइंट्स आई हैव गिवन, will you be able to write in a paragraphs in a coherent manner? Today I will show you how. आपके सामने नोट्स है, आज भी मैंने आपको कुछ समरी पॉइंट्स बता दिया.
You write 2 paragraphs on it. And this is an exercise just for 10 minutes. You cannot take more than 10 minutes. Okay. So let's just say आप 11:40 पे start करते हो, by 11:50, right? आपको ये रोकना पड़ेगा. 10 minutes का ही exercise है. Then I will show you that आपको जो marks मिलेंगे वो descriptive plus analytical approach के लिए मिलेंगे. Descriptive होता है कि आप अपनी बात को articulate कर पाओ, आप उसको लिख पाओ कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स में, पैराग्राफ्स में. अब बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली आंसर राइटिंग सीखने लग जाते हैं. क्वेश्चन पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, पीवाईक्यू दिखा और आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया. एक दिन का एफर्ट्स नहीं है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं. आज मैं आपको एक एक्सरसाइज करवा रही हूँ, ठीक है. 10 मिनट्स, जितने पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं उसको पैराग्राफ्स में लिखो. एंड देन आई विल टेल यू कि ये पैराग्राफ लिखना कैसे. देन आई विल गिव यू डिक्टेशन ऑन इट. ओके. Okay, now tell me what you have written. Anthropology is a holistic discipline renowned for its biosocial approach. That is, it studies men in totality, not in parts. It is interdisciplinary in nature as it integrates various disciplines into it. It studies the past, present, and future aspects of human evolution, society, etc. It is unique for its fieldwork, which strengthens this discipline by adopting direct observation and participation method. It helps us to understand different societies by comparing their similarities and differences through comparative method. Anthropology is also dynamic in nature as the discipline itself is evolutionary. While talking about the scope of anthropology, it is vast as it includes various disciplines. It is classified into 4 major branches, namely biological anthropology, socio-cultural anthropology, archaeological anthropology, and linguistic anthropology, under which we study unique aspects of humanity like human evolution, evolution of society, language, life of humans and their past in an integrated manner. Thus, anthropology is renowned for its unique approach of the study of mankind in total. It finds its relevance even today as it helps to bring humanity perspective by tackling wars, inequalities, etc. It promotes peace and harmony among the mankind. Excellent, very good. कॉपी तो नहीं करी कहीं से, चीटिंग तो नहीं करी है? मैम आप ही के क्लास में तो लिखी मैम. नहीं, एक्चुअली अभी इट्स नॉट इवन 2 weeks नो, और तुम इतना अच्छा कर रहे हो, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं अभी. यू आर सो हार्ड वर्किंग, दैट शोज इन योर राइटिंग. सो हमेशा याद रखना कि जर्नी जितनी डिफिकल्ट है ना, बिकॉज यू हैव टोल्ड मी अबाउट योर थिंग्स, रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा. प्रेशर जो है ना, जो लाइफ में प्रेशर आता है, और जब आपका हार्ट ब्रेक होता है, आपको लगता है कि यार ये कर लेते तो हमारा ये चीज हो जाता, हम कर नहीं सकते, वो ही आपको बनाएगा. क्योंकि जब प्रेशर पड़ेगा आप हार्ड वर्क चूज करोगे, राइट? तो मैं इनफैक्ट आई कैन से दिस that you can be the, like, you know, you are the first person I can see in my, like, you know, experience of these many years कि किसी बच्चे ने, या तो तुमने एंथ्रोपोलॉजी पहले पढ़ी हुई है, No, you have not studied. no, Okay, this great. is my first time. This is your first time, but the way you are writing in the basics class, okay, इससे पहले भी आपने 1-2 आंसर्स मुझे जो बताए हैं, परफेक्ट जा रहे हो आप, ठीक है? गुड, वेरी गुड. But you are writing such a spectacular answer कि मैं confused हो रही हूँ. Okay, यही रखना consistency. You will see your result. Okay, I can give you assurance कि जितना हो सकता है मैं अपनी क्लास में आपको मेंटोर करूँगी. You do not have to pay. नहीं है अमाउंट, प्लीज. मैं ये मेरी क्लास लाइव भी जा रही है, ठीक है? मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलूंगी, यूट्यूब जो भी मुझे देख रहे हैं, कि अगर पैसे नहीं आए तो जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग ही करना है, मत करो आप. ओके, बट यस, एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में लगाओ.
तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये जो आपने आंसर लिखा है इसमें आई डोंट थिंक सो कोई मिस्टेक्स हैं, ओके। अब इसको आप थोड़ा सा हम किस वे में समरी लिखेंगे, इन अ बुकिश मैनर, जो पैराग्राफ्स चैप्टर 1 SCERT का जो है, then so that you can see that when I would be explaining and giving lot of thinkers references on the same topic, how it is different. Right now we are approaching as if we are discussing for the class 11th का 12th का anthropology, but ये आपका यूनिक कंटेंट जब आप बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा तभी जाके आप यूनिक कंटेंट लिख पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? अगर आप इफ योर बेस इज नॉट सॉलिड, अगर आपका बेस सॉलिड नहीं है, यू आर जस्ट अमेच्योर, आप नहीं, आप देखो ना, एमेरिटस प्रोफेसर जो होते हैं, दे आर इन देयर 60s 70s 80s, सो टीचर्स आर लाइक वाइन, वो जितने पुराने होते जाते हैं वो अपने शब्दों में अपने कम शब्दों से ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। Are you understanding this? And they are more like calm when they speak. Although मुझे लगता है कि मैं अपनी 70s 80s में भी इतनी ही energetic रहूंगी, मुझसे हल्के नहीं बोला जाता। Sometimes I speak in a very fast pace. I try to be कि मैं calm way में पढ़ाऊं. But the point here is what I want to convey, that the more you study, the more you invest on this basic point, the more potential high fetch answers you can, fetching answers you can write. Because जितना आप पढ़ते रहते हो आपकी knowledge refine होती रहती है। Okay, so same information, how we are going to write it again, it is there in your SCERT class 11 के book में। अब मैंने इसको जितना अब तक हमने पढ़ा है उसको 2 पैराग्राफ्स में अभी तक रिफाइन कर दिया है, ठीक है। नाउ राइट इट डाउन क्विकली and you have to write down Huma ma'am dictation side में, और उसको बॉक्स बना लेना। So when you are going to write down in self books, मतलब ये जो आप सेल्फ नोट्स बनाओगे, क्योंकि अभी ये रनिंग नोट्स पे है, you have to make 3 notebook. I hope you know. One is for your class running notes, one is for your answer writing practices, हम जो कर रहे हैं, जैसे भी आपने ये समरी लिखा, फिर मैंने वो डिक्टेशन लिखवाया, आप उसको फिर रफ दोबारा अच्छी हैंड राइटिंग में, साफ हैंड राइटिंग में अपने नोट्स में बनाओगे, ठीक है। गुड, आरी क्लैरिटी है? जी मैम। या ओके। Right on. Anthropology is a scientific study. Anthropology is a scientific study of human beings in their totality. ये मैंने सबसे पहले डिफाइन किया था। तो हम देखते भी रहेंगे हमारा सारा पॉइंट कवर अप हो रहा है कि नहीं हो रहा। Anthropology is the scientific study of human beings in their totality, full stop. It seeks to understand humans. It seeks to understand humans not only as biological, it seeks to understand humans not only as biological organisms, it seeks to understand humans not only as biological organisms. Anthropology is the study, scientific study of human beings in their totality. It seeks to understand humans not only as biological organisms, but also as creators, of culture, but also as creators
of culture and members of society. And members of society. The term anthropology is derived. The term anthropology is derived from the Greek words anthropos, bracket में human. The term anthropology is derived from the Greek words anthropos, bracket में human, and logos, bracket में study. ये डायरेक्ट मैंने SCERT के कंटेंट से लिया है, चैप्टर 1. The term anthropology is derived from the Greek words anthropos, ठीक है, ब्रैकेट में ह्यूमन एंड लोगोज में स्टडी, कॉमा, which together mean the study of humankind. Which together mean the study of humankind. Full stop. Unlike other disciplines, comma, anthropology adopts a holistic approach. Unlike other disciplines, comma, anthropology adopts a holistic approach. Comma, examining human life in all its dimensions. Hyphen, biological, social, cultural, and linguistics. Across time and space. Biological, social, cultural, and linguistic. Across time and space. Full stop. It studies both past and present. It studies both past and present human societies. It studies both past and present human societies, comma, thereby providing a comprehensive understanding, of human diversity and unity. Human diversity and unity. Now, just look at all statements, okay, and correlate with the first two chapters of our SCERT book. 2-3 chapters, 2-3 pages. जो पहला पेज है SCERT का, मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का, just try to see, is it sinking all the information in just one paragraph? Okay, so you need to learn this art. We are going to study a lot. हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन यूपीएससी को सब कुछ नहीं चाहिए, उसको क्रिस्पी आंसर चाहिए. क्रिस्पी आंसर बनाने के लिए पहले क्रिस्पी नोट्स बनाओ. तो एक स्टेजेस है, पहले आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा. इट्स जस्ट लाइक अ फूड. वी ईट अ लॉट, but only few components of food particles are helpful for us in
the form of nutrients. All other food, goes out of our body in the form of excreta. वो वेस्टेज है, उसकी जरूरत भी नहीं है हमारी बॉडी को, तो वो हमारी बॉडी उसको बाहर कर देती है. इसी तरीके से मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाऊंगी. उसमें से जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाए, वो मैंने पहले बताया कि देखो बच्चे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है. अब लेकिन आपको आंसर आर्टिकुलेट करना भी तो आना चाहिए. आप 10 पेजेस को 2 पेजेस में कन्वर्ट करो, ये है आर्ट. ओके, अब जल्दी से इसको देखिए. आई विल गिव यू ओनली 3 minutes, 3 to 4 minutes.
Written? Can you see all the points covered? Yes, ma'am. Okay, now write down the next paragraph. The scope of anthropology is very wide. Extremely wide. जो भी आपको adjective use करना है वो आप कर सकते हो. The scope of anthropology is very wide, comma, as it covers different aspects of human existence. As it covers different aspects of human existence. Full stop. The scope of anthropology is very wide, comma, as it covers different aspects of human existence. Full stop. It is broadly divided. It is broadly divided into 4 main branches. It is broadly divided into 4 main branches. Biological or physical anthropology, deals with the study of human evolution. Biological or physical anthropology deals with the study of human evolution, comma, genetics, comma, and biological variation. It attempts to trace the origin of humans. It attempts to trace the origin of humans and understand how human beings have adapted, how human beings have adapted to different environments. Full stop. Cultural anthropology focuses on the study of culture. Cultural anthropology focuses on the study of culture, comma, including beliefs, comma, customs, comma, traditions, comma, and way of life of different societies. Full stop. Social anthropology examines social relationships, comma, institutions, comma,
and structures. Social anthropology examines social relationships. अब देखो मैंने यही लिखवाया होगा. Okay. Social anthropology examines social relationships, comma, institutions, comma, and structures such as family, kinship, religion, and economy. Family, kinship, religion, and economy. Then archaeological anthropology studies. Archaeological anthropology studies past human societies. Archaeological anthropology studies past human societies through material remains. Archaeological anthropology studies past human societies through material remains like tools, comma, pottery, comma, and monuments, comma, helping reconstruct human history and cultural development. Okay? Now write down anthropology. Next paragraph. Anthropology is characterized by certain distinctive features full stop. It is holistic in nature. It is holistic in nature, comma, as it integrates different aspects of human life, as it integrates different aspects of human life into a unified study, full stop. It is comparative, comma, it is comparative, comma, as it studies various cultures. It is comparative, comma, as it studies various cultures and societies to identify similarities and differences, as it studies various cultures, comma, and societies to identify similarities and differences, full stop.
Field work is another important feature, comma. Field work is another important feature, comma, where anthropologists, fieldwork is another important feature, comma, where anthropologists live among the people they study, where anthropologists live among the people they study to observe their way of life. Where anthropologists live among the people they study to observe their way of life directly. This method helps in gaining and this method helps in gaining an in-depth and unbiased understanding of different cultures. Stop. Anthropology also emphasizes cultural relativism, okay, very important line hai ye, comma, which means that culture should be understood in their own context rather than being judged by external standards. Okay? Have you got clarity now? Yes, ma'am. Okay. Now, on this content, जहाँ पे हमने किया है, understanding develop करी है, we are going to have a test. ठीक है? Answer writing test copies निकालेंगे and you will write test number 1. Okay, ये हमारा first test है of SCERT level. आज डेट डालिए. Test 1. I am not expecting brilliant answers. I am expecting whatever I have taught you so far. You people just write those answers. Okay? जो आपको समझ में आता है आप वो लिखोगे. Fine? Yes, you people want, you can take 5 to 6 minutes का note check आप कर सकते हो. But just write down the answers. ठीक है? तो थोड़ा सा हम UPSC level के questions शुरुआत से ही समझने की कोशिश करते हैं.
यूपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, देखो, दे विल नॉट आस्क यू डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी। जो हमने पढ़ा है उसमें दो कॉन्सेप्ट रिलेट है, और मैंने जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, यू नो, एथ्नोसेंट्रिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, ये सब इसमें इन्वॉल्व होगा। तो आई राइट दिस, कैन anthropologist holistic, can anthropology apologies holistic and comparative approach remain free from ethnocentrism, discuss critically. Do field work and cultural relativism ensures or ensure objectivity in anthropology, ensure objectivity in anthropology, examine their limitations, plus examine their limitations. Okay, try to reflect this. Okay, you can take 15, half an hour if you want, right? So you can just take 10 minutes to just see the notes. I mean, बहुत वो भी मत देखो, I would say start writing. Okay, तो आप इस पे ये टेस्ट करो, and then we'll discuss in the class only. Okay, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत इजी है क्वेश्चन, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट्स नॉट डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है। समरी मैंने कहा जब आपको, दैट वाज डायरेक्ट, यू डिड रियली वेल। नाउ डू एप्लीकेशन। ओके, ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे, क्लास में लाइव हैं, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड राइट इट डाउन।